Mr. Bernard Francois, who has been here for the last 3 years, and he had been very kind to advise, to support us on this rural development initiative. And so he, since he is leaving Pakistan now after completion of his tenure, so we thought it is a good opportunity to invite all of you and bid a farewell to him, and also welcome Mr. Milko. Honorable member of the Provincial Assembly, Excellencies, I'm very happy to be here, and I thank you for being here for this farewell, which is also a welcome to my successor, Milko. I have been very happy to discover Balochistan. I spent बनार साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उन्होंने जिक्र किया कि उनके जो सक्सेसर हैं मिस्टर मिल्को वही पाकिस्तान में आए हैं, और उनकी जो एसोसिएशन है हिंदुस्तान के हाल I had the chance to spend some days in Quetta in 1983, and so I was happy to come back in a city that I appreciated in this time. And I spent, sorry, not 3 but 4 years in Pakistan, and I have been very happy to accompany BRSP in the existing and in the new program. इन्होंने 4 साल का पाकिस्तान में गुजारा है, और BRSP के साथ इनकी एसोसिएशन कहने की बड़ी अच्छी रही है, और रूरल डेवलपमेंट के हवाले से जो इनिशिएटिव यहाँ पे पिछला प्रोग्राम भी जो BCP का हमारा था 3 साल का, और उसके बाद ये नया प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हुआ है, तो उनको बड़ी खुशी है इसमें हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं। And in 2015, I was still very young in Pakistan, and we could discuss and negotiate and agree for this new program we could already praise. It was with the former Minister of PND, and I'm very happy that currently now this what was a project discussed with some authority is now a reality, and that we have extended the action of BRSP on most of the district of Balochistan. 2015 में ये कहते हैं कि नए आए थे, और उस वक्त जो पुराना प्रोग्राम चल रहा था उसके साथ साथ नया प्रोग्राम जिसको हम ब्रेस कहते हैं, हिंदुस्तान रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उसने किक ऑफ किया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। तो When in 2015 we were asked by our senior hierarchy in Brussels to select some provinces in Pakistan because it's difficult to work in your immense country, and we decided to go ahead with Balochistan. For which reason? I think because Balochistan deserves a particular interest, because Balochistan is facing different problems. 2015 में यूरोपियन यूनियन क्वार्टर ने यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन पाकिस्तान को ये कहा कि वो पाकिस्तान में सूबे सेलेक्ट करें जहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। तो ये वो वक्त था जब सिंध के साथ बलूचिस्तान को इन्होंने एज ए प्रायोरिटी प्रोविंस चूज़ किया, और उसमें अपस्केल करने का जो अपने इंटरवेंशन है रूरल डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन रूल्स इंटरवेंशन है, उसको अपस्केल करने का प्लान बनाया। We decide also to increase our action in Balochistan for the reason that there were not so much donors present to work with you already. So it was some empty place, it was not crowded in terms of presence of donors. And finally, I would like to say that the last reason
was the fact that we could initiate a good dialogue with the authorities. And this is very important because we can do what we want. If we have not a good understanding, nothing will remain. एक वजह जो बलूचिस्तान को सिलेक्ट करने की थी वो ये थी कि यहाँ पे डोनर का बहुत ज़्यादा रश नहीं था जिसका कंपेयर करें दूसरे प्रोविंसेस के साथ, इसलिए रिसोर्स फ्लो भी कम था डोनर की तरफ से। तो ये एक रीज़न थी कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि बलूचिस्तान में अपने काम को मज़ीद वसअत दें और एक्सपेंड करें। और उसके लिए अथॉरिटीज़ के साथ जो इनकी मीटिंग्स रही, जो इनका डायलॉग हुआ, उसमें भी बड़ा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से बड़ा वेलकम किया गया। तो उस डायलॉग की बदौलत इस प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी गई। For us, our objective is to support the government of Balochistan in its struggle against poverty and for development. We have the biggest program, which is the rural development, but we are also working in several other areas. बलूचिस्तान में जो बड़ा प्रोग्राम है इनका वो रूरल डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें इन्होंने एक्सपेंशन की और इसके अलावा भी कुछ और एरियाज भी सेक्टर हैं जैसे एजुकेशन है, जिस सेक्टर्स में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। We are working with the Department of Education. We are working with the Department of Finance, with the technical assistance. In fact, we are co-funding the MDTF, which is also working with the Department of Finance through technical assistance of the World Bank. We are working with the Provincial Assembly, and salutation to the new Parliament and the new member of the Cabinet. We are also planning and preparing two important actions. One is against the problem of water. Well, to go quickly, but the last time we met your Minister of Planning and Development Department, and usually we ask him what was the problem, and he said the three priorities: water, water, and water. So from this time we decided to do something. It was not planned, and we mobilized now we are preparing a program. Identification ended, and we continue to prepare this program from the end of September. और रूरल डेवलपमेंट के अलावा जो प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली के साथ भी इनका एक प्रोग्राम चल रहा है। और अभी ये कह रहे कि जो नई हुकूमत है उसका बलूचिस्तान असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट जो हुकूमत बलूचिस्तान ने आइडेंटिफाई किया कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें क्या थे, हमेशा ये कहा गया कि नंबर 1 पानी, नंबर 2 पानी, नंबर 3। तो पानी की जो प्रायोरिटी है उसके हवाले से सितंबर में ये बता रहे हैं कि एक मिशन का आ रहा है, और तो ये भी एक और फर्दर एक्सपेंशन होगी इनके प्रोग्राम की कि पानी के सेक्टर के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होगी। And not to avoid to be too long, I will just mention that we are also preparing a program to support the Balochistan Rule of Law Roadmap. This program also, like the program related to water, should be active in 2019. इसके अलावा इनका एक प्रोग्राम बलूचिस्तान के हवाले से रूल ऑफ लॉ के ऊपर है जो कि 2019 तक चलेगा। और इससे पहले इन्होंने एक और इनिशिएटिव बताया था कि मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, जो कि केपी, फाटा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ डोनर मिलके उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन अपनी सपोर्ट दे रहा है। Well, but all this increase in the size of cooperation would not have been possible without a good relationship with the provincial authority of the province. And we hope to continue and to intensify the political and policy dialogue to increase the understanding and to be sure that where we are supporting you, we are reaching results. Because this is our duty
we mobilize the money of the European taxpayer. Our responsibility, and we becomes our common responsibility with our technical assistance and your partner, is to be sure that this money of the taxpayer is used to get result and sustainable result. ये तमाम पार्टनरशिप जो अथॉरिटीज़ हैं हुकूमत बलूचिस्तान है उसकी पार्टनरशिप के बगैर मुमकिन नहीं था, तो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ जो हुकूमत बलूचिस्तान के साथ इन तमाम प्रायोरिटी एरियाज़ पे हम काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन टैक्स पेयर का पैसा है वो हम मोबिलाइज करते हैं और हुकूमत बलूचिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। I would say that's it. I will not be longer. Thank you again for being here for this ceremony, and I'm sure my successor will be happy to work with you, and the dialogue will be so good and maybe better than with me. Thank you very much. Thank you very much, Bernard. I would now request Mr. Milko. Thank you very much. I will